Next topic, which is volumetric strain. Okay, symbolic representation, which is volume. V stand for volume, E stand for strain. That is called as volumetric strain. It is defined as the ratio of change in volume upon original volume. Okay, that is called as a change in volume, which is equal to delta V upon original volume divided by capital V. So volumetric strain is equal to change in volume upon original volume. Okay. Now next topic, which is very important, formulas. There are also some important. यूनिएक्सियल लोडिंग. यूनिएक्सियल नाम में ये मतलब हम एक ही फोर्स से एक ही डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आइदर इन एक्स डायरेक्शन, आइदर इन वाई डायरेक्शन और आइदर इन जेड डायरेक्शन. ओके, तो अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स रहेगा तो उसमें स्ट्रेन कैसे चेंजेस होने वाले, तो उसका फॉर्मूला देखो. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू सिग्मा ई टू द बेस एक्स is equal to sigma x upon e. That x will indicate that strain in x direction. This x will indicate that strain in stress in x direction. Okay. Similarly, strain in y direction, which is strain in y direction, which is equal to minus mu into sigma x upon capital E. That is called as strain in y direction. Similarly, strain in z direction. The formula diagram you can look this. Strain, what is the force applying in the z direction? Okay, here the force applying x direction, here the force applying y direction, here the force applying z direction. Then its formula will be strain in direction is equal to minus mu into stress in z direction divided by capital E. Okay. Similarly, for this volumetric strain, okay, what is volumetric strain for uniaxial loading? Direct formula, which is volumetric strain, it defines the ratio of change in volume upon original volume is equal to Ex plus Ey plus Ez, or change in volume upon original volume, it can have another formula, E into 1 minus 2 mu, that E is called as strain. Okay, whatever the strain, either in x, y, z, directly we are given the value or we have to calculate that value. Okay, that mu is called as Poisson's ratio, we already discussed in previous lectures. Okay, now this is for uniaxial loading. Okay. Similarly, for biaxial loading, what is means biaxial loading? From the name itself indicate that biaxial loading means it has two direction, means we are applying two force on two direction. P1 force in horizontal direction, P2 force in vertical direction. Okay. Therefore, strain in x direction is equal to formula. अगर आपने ये दो फॉर्मूले किए ना, ये सब फॉर्मूला आपको हो जाएगा. सिंपल है, देखो कैसा है. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, यहाँ पे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन ई. तो यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स अपॉन ई लिखना है. सिर्फ यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एट अ टाइम दोनों फोर्स क्या क्रिएट एट अ टाइम अप्लाई होने वाले, मतलब एक्स में भी चेंज हो गया, यहाँ पे वाई में भी चेंज हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ वाई में चेंज हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ जेड में चेंज हो रहा था. ठीक है, यहाँ पे क्या एट अ टाइम दोनों साइड में चेंज हो रहा है, आइदर इन एक्स इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखना है मालूम क्या, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इनटू सिग्मा वाई अपॉन ई. ध्यान में कैसे रखना, देखो जिस डायरेक्शन में पहले आप लिख रहे हैं, अब यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, किसका, एक्स का. अब यहाँ पे एक्स का तो होगा, यहाँ पे वाई हमने क्या किया, वाई में भी फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस साइन देके म्यू इनटू सिग्मा वाई अपॉन ई लिखना है, बस इतना ही करना है. नाउ सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, अब यहाँ पे चेक करो वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ई. अभी बचा कौन सा है, एक्स वाला, तो यहाँ पे माइनस म्यू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन ई आ जाएगा. ओके, दिस इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन. ठीक है. नाउ सिमिलरली फॉर दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर बायएक्सियल, which is change in volume, which is equal to volumetric strain is equal to change in volume upon original volume is equal to sigma x plus sigma y divided by capital E into 1 minus 2 mu. This is standard formula, you have to by heart this formula directly. Okay, this is called as stress application, strain apply in x and y direction. Okay, that is biaxial load. Now last, which is triaxial loading. Triaxial loading, from the diagram you can conclude this, x is applied, y is also applied, z is also applied. From three direction we apply at a time three direction force.
दैट्स व्हाई स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो चेक करो अभी यहाँ पे जैसे हमने अप्लाई किया था ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना। सबसे पहला कौन सा था, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में था ना, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स लिखना है, ठीक है, यहाँ पे म्यू नहीं लिखना है, जिसका पहला एक्स रहेगा वहां पे म्यू नहीं लिखना है, बाकी सबको म्यू मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। अभी बचा कौन सा, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन देके माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। सिमिलरली जेड के लिए माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। नाउ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पे y डायरेक्शन था तो इसके लिए अभी y पहला लिखना है, लेकिन उसको म्यू मल्टीप्लाई नहीं करना। तो सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू इनटू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू इनटू सिग्मा z अपॉन। सिमिलरली फॉर स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे z ना, तो यहाँ पे म्यू अप्लाई मल्टीप्लाई करना नहीं, किसको, सिग्मा z को, ठीक है। तो एज इट सिग्मा z अपॉन ई, बाकी रिमेनिंग कौन से x एंड y, तो उन दोनों को क्या करना है, म्यू अप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस म्यू इनटू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर ट्राइएक्सियल, ठीक है, सेम है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर बाइएक्सियल था ना, सेम एज इट इज है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड हो गया, सिग्मा जेड ऐड हो गया। तो सिग्मा जेड मतलब क्या था, स्ट्रेस अप्लाई इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तीन डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था, होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, ओके, एंड 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू, ऑल टर्म्स आर एज इट इज, ओनली सिग्मा जेड इज एडेड, ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज, हमने पॉइजनस रेशियो सीखा था, उसका एक रेंज था 0 to 0.5। तो 0.5 क्यों था, उसका एक रीजन है, वो आप भी समझेगा। देखो y वैल्यू ऑफ म्यू इज अप टू 0.5, ठीक है। हमने बाइएक्सियल, ट्राइएक्सियल, यूनिएक्सियल, ये तीन हमने लोडिंग सीखे थे, ठीक है। तो तीनों में म्यू था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला लिख रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग, उसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू ई इनटू 1 माइनस 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू, म्यू का रेंज कितना था, 0 to 0.5, इफ वी आर पुटिंग, इफ वी पुट म्यू इज इक्वल टू 0, अगर हम लोएस्ट वैल्यू पुट अप करते 0, तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ ना कुछ आपका ई का वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका वैल्यू आने वाला है कांस्टेंट, ठीक है, इनटू 1 माइनस 2, म्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे e का वैल्यू एज इट इज, ये e का वैल्यू एज इट इज इनटू 1 माइनस 2 इनटू 0 दैट इज बिकम्स 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, e इनटू 1 माइनस 0 व्हिच इज 1 एंड इट इज इन मल्टीप्लिकेशन विद स्मॉल e, दैट्स व्हाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू कितना आया, जो आपका स्ट्रेन का वैल्यू रहेगा वही वैल्यू किसका रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नाउ इफ यू पुट, अगर आपने म्यू का वैल्यू 0.5 पुट अप किया तो क्या होगा, ठीक है। इफ यू पुट mu is equal to 0.5, then volumetric strain is equal to E into 1 minus 2 mu। अगर mu का वैल्यू हम 0.5 लिखते तो क्या होता है, E into 1 minus 2 into 0.5 that is 1, 1 minus 1 that is 0, 0 into anything answer is 0। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या मिलता है, 0। बट ऐसे कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आप कोई भी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे और उसका फोर्स अप्लाई आइदर इट इज टेंसिल आइदर इट इज कंप्रेसिव, ये होने के बाद वो मटेरियल के ऊपर का वॉल्यूम चेंज डायरेक्टली 0 ही हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी हैपन, दैट्स व्हाई म्यू हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज 0.5, मतलब मिनिमम हम क्या सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 0.5 रख सकते हैं, वॉल्यूम कभी भी चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इफ वी आर पुटिंग, if we put value of mu is equal to 0.6, ठीक है, अगर मैंने 0.5 से ज्यादा करा तो क्या हो सकता है, then volumetric strain is equal to E into 1 minus 2 mu, mu की वैल्यू अगर 0.6 पुट अप करता हूं तो E into 1 minus 2 into 0.6 that is 1.2, E into 1 minus 1.2 that is minus 0.2। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो भी आपको आंसर मिलेगा which is in terms of minus,
ठीक है। तो वॉल्यूम कभी आपका माइनस में नहीं जाएगा, एक तो कम जब होगा हो सकता है, नहीं तो ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो माइनस में कभी नहीं जा सकता। इसके लिए म्यू का जो अल्टीमेट वैल्यू रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है 0.5। मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम उसका चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब जितना पहले वॉल्यूम था 20 mm3 तो उतना ही रह सकता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो इधर चेंज भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। मतलब क्या है यहाँ पे वैल्यू म्यू की वैल्यू 0.5 जब पुटअप कर सकते हैं तो उसमें चेंजेस भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ सकता है यहाँ पे 0, बट अगर 0.5 से अपन ज्यादा वैल्यू पुटअप करते तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है निगेटिव में, तो वॉल्यूम कभी निगेटिव में पॉसिबल नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ म्यू व्हिच इज अप टू 0.5। थैंक यू। Example on volumetric strain of circular bar subjected to uniaxial loading. Question number 1. A circular bar 200 mm long, 25 mm diameter is subjected to an axial pull of 50 kN. The change in diameter was observed to be 0.0047 mm. If capital E, that is called the modulus of elasticity, 135 kN per mm square, and Poisson's ratio we given 0.25. Calculate change in volume of the bar. Okay. So now sort out some given data. A circular bar 200 mm long, that is we given original length which is 200 mm, 25 mm diameter, that is original diameter 25 mm, is subjected to an axial pull. That axial pull is called a tensile force which is 50 kilonewton. Convert it into Newton, 50 into 10 raised to 3 Newton. Next, the change in diameter, that is called as delta D, we given 0.0047 which is in mm. If capital E given 135 kilonewton per mm square, convert it into Newton per mm square. Okay, so 135 as it is kilo, it means into 10 raised to 3. We given also 0.25 which is the value of mu Poisson's ratio. We have to find out change in, calculate change in volume of the bar, that is called the delta V. Okay, so change in volume of the bar, how can you find out that change in volume of the bar? We know for uniaxial loading what is our formula, change in volume, that is called as change in volume upon original volume, which is equal to strain into 1 minus 2 mu. ओके, तो अभी आपके पास कैपिटल म्यू है, सॉरी म्यू है, वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। स्ट्रेन आल्सो वी कैन कैलकुलेट। नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट स्ट्रेन? नाउ वी नो द स्ट्रेन इज इक्वल टू कैपिटल ई आपके पास है, तो फॉर्मूला कैसे आएगा? कैपिटल ई, हुक्स लॉ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, आपके पास कैपिटल ई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Okay, we don't know the value of E, that's why we use this formula capital E, because we know the value of capital E, we can use here Hooke's law formula. Capital E is equal to stress by strain. Now in this we know the capital E, our aim is to calculate small e, that is called a strain. This is our stress, we also don't know, but we can calculate stress by using formula, basic formula. Stress is equal to force upon cross sectional area. That force is already given, which is 50 kilonewton. Convert it into Newton, 50 into 10 raised to 3. Area, that area we also know the diameter D, that we can calculate pi by 4 D square, that is 50 into 10 raised to 3 divided by pi by 4 D square, that is D is called at 25, it means 25 square. First of all calculate whole this term, then divide 50 into 10 raised to 3 by with this term. You will get stress which is equal to 101.86 Newton per mm square. Once you get stress, easily you can calculate strain. Okay, now put up the stress in this equation. Hence capital E is equal to stress by strain. We know the value of capital E, which is 135 into 10 raised to 3 is equal to stress, we know 101.86 divided by small e. We have to find out small e. Now small e, it is in dividation on right hand side. When we shift to the left hand side, it is comes in multiplication, or and it is in numerator, which is equal to into 135 into 10 raised to 3 is equal to 101.86. Okay,
Now we have to shift it 135 direction to the right hand side. When we are shifting to the right hand side, at that time this is in comes in denominator of 101.86. This is the required answer. Now after the ratio of this, you will get strength which is equal to 7.5 into 10 raised to minus 4. Okay. Once we get that strength, we know the value of capital E, small e, we know the value of mu, but now we don't know the value of volume. Now we can calculate also volume. Volume is equal to total volume, length, we can calculate volume, which is going to be calculated with the help of area into length. What is the formula of volume? That is called as area into length. We know the area formula, pi by 4 d square into length, pi by 4 d is which is called as 25, that 25 square into small l, that is given as 200 mm. Okay. Now we will get volume which is equal to 9.8174 into 10 raised to 4 mm cube. Okay. Therefore equation 1 will be, now we know the value of also v, we know the value of small e, also we know the value of mu. Therefore equation 1 will be change in volume upon capital volume, which is 9.8174 into 10 raised to 4 is equal to, we know the value of small e, that is 7.5 into 10 raised to minus 4 into 1 minus 2 mu. We also know the value of mu, which is already given as 0.25. Now multiply 0.25 with 2, subtract with 1, you will get something answer. That we answer is multiply with 7.5 into 10 raised to minus 4. Now change in volume upon 9.8174 into 10 raised to 4. After the multiplication of all this term, you will get something value. Now we have to find out change in volume. That change in volume is equal to this answer into 9.8174. It is in dividation with delta v. When we shift to the right hand side, it is in multiplication with this term. That's why 9.8174 into 10 raised to 4. You will get change in volume, that is called as 37 mm cube. So this is our required answer. What we have to find out, change in volume. Thank you. Hello students. Now example based on triaxial system. Question number 1. A cube of 100 mm side is acted upon by stresses along 3 directions such that sigma x 50 Newton per mm square, it is tensile, sigma y 40 Newton per mm square compressive, sigma z 30 Newton per mm square tensile. Find strain in each direction and change in volume. Okay. Now for triaxial stress system, we already draw this diagram. Now sigma x, sigma x, sigma y, sigma y, sigma z. Sigma x, it is a tensile, that's why tensile force stress is applied. Sigma y, it is compressive, that's why arrow goes in the inside of the box. And sigma z, it is tensile, that's why arrow goes to the outside of the box. Okay. Now find stress. First of all, sort out some given data. A cube of 100 mm side, that the side of this cube which is 100 mm, and it is a cube, that's why all sides are equal. Okay. Now its cube of 100 mm side, that is side of cube, side is equal to 100 mm, is acted upon by stresses sigma x. So we given directly sigma x, which is 50 Newton per mm square, sigma y, which is minus 40 Newton per mm square. Why we are taking minus? Because it is compressive, that's why we are taking minus. Because it is tensile, that's why we take it as a plus. Sigma z, it is tensile, which is 30 Newton per mm square. Okay. Now find out what we have. Again we have to give a capital E, 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Again we given mu 0.25. Okay. Now we have to find out strain in each direction. That is first Ex, Ey, Ez, and second we have to find out change in value, that is called as delta V. Okay. Now solution, which is
we know formula for triaxial system. Change strain in x direction. We know that strain in x direction, sigma x upon E minus mu into sigma y upon E minus mu into sigma z upon E. Okay. Now common factor from all three member, which is capital E, that is called modulus of elasticity. Take it common, that it becomes 1 upon E in bracket sigma x minus mu into sigma y minus mu into sigma z. Okay. Now just we have to put up all the values. Capital E value, which is 2 into 10 raised to 5, 2 into 10 raised to 5 in bracket sigma x value, which is already given 50, minus value of mu, which is 0.25, into value of sigma y, which is minus 40. Keep it in bracket, minus 40 minus mu again 0.25 into sigma z, which is 30, multiply with 30. Now calculate all these three terms, multiplication of these two terms, then subtract these two, then you will get something answer, and it is in multiplication of with these terms. Now take the reciprocal of 1 upon 2 into 10 raised to 5, you will get something answer, that is in multiply with this term, you will get strain in x direction, which is 2.625 into 10 raised to minus 4. Okay. Similarly, you can calculate strain in y direction, which is sigma y upon E minus mu into sigma z upon sigma x upon E minus mu into sigma z upon E. Again same common factor, which is E, that's why taken is common. 1 upon E is into sigma y minus mu into sigma x minus mu into sigma z. Now Ey is equal to, just put up all values, 2 into 10 raised to 5, sigma y, which is minus 40 minus 0.25, sigma x, which is 50 minus 0.25, sigma z, which is 30. Now calculate all these values and multiply with this term, you will get Ey answer, that Ey answer, which is minus 3 into 10 raised to minus 4. Okay. Now strain in y direction we got. Similarly, strain in z direction, same formula, modified formula same, 1 upon E. Otherwise you can write sigma z upon E minus sigma z upon E minus mu into sigma x upon E minus mu into sigma y upon E. Again common factor, which is E, take it out common. Now in bracket sigma z minus mu into sigma x minus mu into sigma y. Okay. 1 upon 2 into 10 raised to 5, this as it is. Sigma z value, which is 30, minus 0.25, sigma x value, which is 50, minus 0.25, sigma y, which is value, which is minus 40. Again kept in a bracket, which is minus. Hence, after calculating these three terms, you will get strain in z direction, which is 1.375 into 10 raised to minus 4. Okay. Student, now we get strain in x direction, strain in y direction, strain in z direction. Okay. Now we have to find out, our first aim is complete. We have to find out change in volume. So now for triaxial stress system, change in volume, that is called volumetric change, is equal to change in volume divided by original volume, which is sigma x plus sigma y plus sigma z upon capital E into 1 minus 2 mu. This is the basic formula. Now we know sigma x, we also know sigma y, we also know sigma z, we also know capital E, we also know mu. Just we have to find out delta V. We don't know the value of volume, but we can calculate. How? We have already given in questions a cube of 100 mm side, means cube, for cube side, volume of cube, which is side cube, hence 100 cube. Okay, that 100 cube, which is 100 into 100 into 100, directly 10 raised to
1 2 3 4 5 6 10 raised to 6. So we will get volume 10 raised to 6, that is mm cube. Now put this value in this equation, you will directly get change in volume. That's why delta V divided by 10 raised to 6 is equal to sigma x directly given, which is 50, plus sigma y, which is minus 40, keep it in bracket, minus 40, plus sigma z, which is 30, divided by capital E, which is 2 into 10 raised to 5 as it is, into 1 minus 2 mu value, which is 0.25. Okay. Now add these two terms, you will get something answer, and multiply with this bracket, you will get something. Now delta V divided by 10 raised to 6. Now we have to find out delta V. We shifted 10 raised to 6 to the right hand side, then it is in multiplication with this term. Now after getting multiply with this term, you will get delta V, which is equal to 100 in mm cube. That is called a change in volume of the cube when we are applying triaxial load. Okay.